So finally, big breaking news coming from Accenture. Slot mail is sending by Accenture. If you see here that choose your virtual slot. So what is this mail? It's one more thing is phase 3 is started. If started, then what is this mail? Means who are receiving this type of mail? Already we know that error is coming and many candidate received the error and did not give the assessment. Then after that many candidates received this mail also. And what is this mail? Because अगर तुमको यहाँ पर देखोगे, I have got a mail regarding assessment slot booking after 8th January auto submitted exam. Means after error they are sending the virtual assessment slot again. And if you see here error faced in phase 1 got a mail yesterday. Means this mail yesterday they got. Means only those candidate getting the mail who got the error. और यहाँ पर ऐसा भी है कि after no update means after applying you will also receiving this mail. पहले वीडियो को समझ लो कि मेल में क्या होने वाला है. After that we will discuss about this. What are the We are in the process of scheduling your virtual interview as part of ASE role. Please click here to available slot. You have to click here and choose the available slot. Please choose your slot by 10th February 6 PM. Select your slot carefully as you will not have an option to change it later. ठीक है. और एक चीज और बता दूं कि अगर तुमने immediate इसको बुक नहीं किया ना स्लॉट को, तो यहाँ पे स्लॉट फुल हो जाएंगे. देन यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर. ठीक है. फिर यहाँ से फिर से स्लॉट का मेल नहीं आने वाले. सो प्लीज बुक योर स्लॉट एज सून एज पॉसिबल. नाउ मेन थिंग, हु गॉट द error in the communication or we can say in aptitude. So they are again sending the assessment mail virtual slot. You have to book the slot. Faced error in phase 1. Then I got the mail yesterday. And one more thing that I got the regarding mail slot booking after 8th January auto submitted error. तो जिसको error आया था उसको यहाँ पे virtual slot का mail तो आ रहा है. But I want to tell you maybe this is phase 3. यहाँ पर phase 3 ऐसे कंफर्म हो जाएगा. मेरे हिसाब से phase 3 चल रहा है. बस एक कमेंट अगर तुमको यहाँ पे देखने मिलता है कि अगर किसी को भी यहाँ पे इस तरीके का मेल आया है कि that you applied and after applied you did not received any mail but yesterday or today you received the virtual slot mail, then this is the phase 3 confirmed. This is phase 3 confirmed. ठीक है. अगर किसी को इस तरीके से आया है तो बताओ, क्योंकि एरर के बाद सबको आया है. आफ्टर एरर पीपल रिसीविंग द वर्चुअल स्लॉट मेल, दिस इज द नॉर्मल कि तुम्हारा ऑटो सबमिट हो गया. एरर के बाद लोग ने फिर से दे दिया. बट इफ यू अप्लाइड एंड यू डिड नॉट रिसीव्ड एनी मेल बट यस्टरडे यू रिसीव द वर्चुअल स्लॉट बुकिंग मेल, देन दिस इज द कंफर्म्ड फेज 3. ठीक है. दिस इज कंफर्म्ड फेज 3. व्हाट यू हैव टू डू, बुक द स्लॉट एज सून एज पॉसिबल बिकॉज इफ यू टेकिंग टाइम बुकिंग द स्लॉट एंड दिस विल फिल इमीडिएटली. और जैसे ये बुक स्लॉट फिल होगा, फुल हो जाएगा और उसके बाद तुम फिर से यहाँ पे रीशेड्यूलिंग कुछ भी नहीं मिलने वाला है. सो दिस इज द लास्ट chance. If you got the error and after error you received the virtual slot, then fill the slot as soon as possible. Book your slot as soon as possible. After that you will not receive any mail. ठीक है. any virtual mail. This is the last chance if you got the error and after error you are receiving this mail. So what is going on? तो ये तो पता चल गया. after error you are getting this mail. Even phase 1 candidate getting the mail 8th January auto submitted means this is phase 2. ठीक है. this is phase 2 candidate receiving this mail because he got the error or she got the error of auto submission. And this is the phase 1 means phase 1 and phase 2 who got the error are getting the virtual slot mail again. This is the confirmed. ठीक है. But we want to think that if this is phase 3 and this is confirmed phase 3, so how we can consider this? If someone applied and did not receive any mail till date when he applied or she applied, so if he or she received the virtual slot mail, then this is confirmed phase 3. So if you received and you are getting this scenario which I am telling you, then please comment down and tell me yes you get the mail after applying or after registration. First time you are getting the mail, that's it. So then this is phase 3 and what you have to do, you have to start the preparation. Use the PDF link in the description box. Start your preparation and please keep checking your mail. If this is phase 3, then यहाँ पे मास वर्चुअल असेसमेंट के मेल सेंड होने वाले हैं बहुत जल्द. अगर ये फेज 3 है तो देन यहाँ पे एक ही चीज काम आएगी. if you are getting the error from the Accenture side, then they will reschedule your interview, your communication, your aptitude. This is simple as that. We already seeing this mail. ठीक है. But if you are not doing preparation, if you are not starting preparation and everything goes well but you did not give your 100% in aptitude, then rejection is compulsory, rejection is mandatory and rejection will happen. तो ये सिनेरियो होना चाहिए. उनकी तरफ से कुछ भी होता है एरर, अच्छी बात है, तुम्हें रीशेड्यूलिंग मिल जाएगी. बट अगर तुम्हारी तरफ से प्रिपरेशन वीक है, then you can't proceed further or they will definitely reject you or there will be a 6-month cooling period applied. You can't apply in any opportunity of Accenture, not in non-tech role, not in IT role. ठीक है. So use that PDF link in the description
box. Already told you many things: communication, project based questions, and aptitude, technical questions. Everything is in that PDF. Check out, link in the description box. And if you received this, one more thing I want to tell you, if you received this type of scenario, भाई प्लीज जल्दी से कमेंट कर दो, और यहाँ पे कमेंट कर दोगे तो एक नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा ताकि लोगों को पता चले कि यस दिस इज फेज 3 और मे बी दिस इज फेज 3 होना भी चाहिए यार। अब बहुत हो गया क्योंकि काफी लोगों ने अप्लाई किया था, नो अपडेट टिल डेट व्हेन दे अप्लाइड। So maybe I hope this is phase 3 and you will also receive the mail after registration. So please start your preparation and please tell me in the comment section if you receive the mail after registration. यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ book your slot as soon as possible. The one thing is if you are not applying or not booking slot immediately, then this slot will be not available showing. ठीक है, यहाँ पे एरर आ जाएगा कि no available slot is available. ठीक है, फिर वहाँ पे ये होगा कि फिर तुम रिजेक्ट हो, फिर यहाँ पे वर्चुअल स्लॉट का अगेन मेल नहीं आने वाला है। तो प्लीज फिल दिस फॉर्म एज सून एज पॉसिबल एंड क्लिक हियर एंड बुक योर स्लॉट, बुक योर टाइमिंग, और एक बार में अच्छे से करना ताकि दूसरी बार ना करना पड़े क्योंकि यू कांट चेंज इट लेटर। ठीक है, प्लीज टेक योर टाइम टू बुक योर स्लॉट बट प्लीज इमीडिएटली यहाँ पे बुक करो। ठीक है, एंड इफ यू हैविंग एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन एंड चेक आउट द PDF, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।